काली सब क्वेश्चन रे नथिला काली रे जहा रिकॉर्डिंग करछि तुमको वीडियो सेक्शन रे मिलुनी की कहला लेट मी चेक एक मिनट how many questions were there is there सब क्वेश्चन रो अछि है ना वीडियो सेक्शन को जीवो कौन है 8 अच्छा तमे कहू नंबर ऑफ क्वेश्चन ता रेकॉर्ड हेनी कि ओके सो मो एग्जैक्टली ताको ध्यान देनी ठीक अछि आई विल लुक आफ्टर दैट ओके ओके गॉट इट हाँ हाँ बुझी पाइली प्रॉब्लम अच्छा टोटल टे एमिति केमते अधारू स्टॉप हो जाई छी पता नहीं यार टेक्निकल इशू जो होइते के ना मु तो स्टॉप करने मु तो एट द एंड स्टॉप करथली एक मिनट लेट मी चेक नाइस कमिंग स्क्रीन आसुची समस्त को क्वेश्चन विजिबल टू ऑल now I will start from there itself. Good morning Shakti Sakarika 26th question number 26th 26 questions now एक मिनट हमें डॉल्फिन विषय तो बहुत डिस्कस करी आज जाए है ना काली भी डिस्कस करथिले तमते डिस्कस बारंबार हेले कोन होई जीवो ना बहुत सारा जिंस एटा बारंबार रिपीट हे कि मन रही जीवो सेटा होची तमरो बेनिफिट रहबो कोन एमसीक्यू रे के बारंबार हम सेही जिंस को डिस्कस करी कि सेटा रट्टा हे जीवो पूरा है ना सो क्वेश्चन नंबर 26 which is the classification of Gangetic river dolphin IUCN रे status कोन whether this is least concern endanger okay तले Gangetic dolphin ऊपर मते फटाफट कहि दियो एटा त मु जानि छि एवरीवन इज endangered critical endangered नो हो तले critical endangered इंडिया रे कोन कोन जेमते रिनो हे गला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हे गला बेंगल फ्लोरिकन हे गला घारियाल्स हे गला ब्राउन बियर हे गला then pygmy hawk हे गला then अंडमान रोडेन हे गला किंबा तमरो फ्लाइंग स्क्विरल हे गला तो बुझि परछन दिस आर द क्रिटिकल एंडेंजर्ड और यू में से मालाबार सीवेट कथा नहीं जाओ है ना एमान को कहै छै क्रिटिकल एंडेंजर्ड ओके होप एमती सुनी सुनी मन रही जो बुझि परछन नहीं जेमती कहली पिग्मी हॉक कोठी देखा जाए आसाम रे देखा जाए जानचो सबटू वर्ल्ड रो स्मॉलेस्ट पिग है ना नाटा मने नहीं पिग्मी हॉक से क्रिटिकल एंडेंजर्ड रेड से रिनो जानिचे तमे ग्रेट इंडियन बस्टार्ड हमें जानिचे बेंगल फ्लोरिकन हमें जानिचे मालाबार सीवेट हमें जानिचे बुझि परछन ना दिस आर द किंबा हमरो रैट स्पीसीज भी अछि क्रिटिकल एंडेंजर कि हमें ब्राउन बियर कथा नहीं जाओ ब्राउन बियर ए तो सब ऑलरेडी हमें डिस्कस करी एमती नहीं कि डिस्कस करिने हा कि नहीं ब्राउन बियर कथा भी मु डिस्कस करी सब डिस्कस अछि हां पिग्मी हॉक टा मु तुमको कहिनी बस आसाम रे मन रखी तो पिग्मी हॉक स्मॉलेस्ट पिग बहुत ही छोटी एटा देखा जाए है ना तो ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड एमते क्रिटिकल एंडेंजर्ड हम जानि छे अच्छा गैंगेटिक डॉल्फिन हम जानचे नेशनल एक्वेटिक एनिमल गंगा रे देखा जाए तारो है ना याको शिशु करा जाए ता पई मु कहथले विक्रमशिला सेंचुरी अछि तारो प्रोटेक्शन पई है ना और आर कंजर्वेशन पई बिहार गवर्नमेंट बहुत सारा स्टेप नउचंती बस ए थिला हमर गाय ओके नाउ कम टू द पंचमित्र ये ना तो सुनी थी ये कहाँ सहित एसोसिएटेड ये बहुत ही इंपोर्टेंट आउ ये वर्ष आसीबार चांसेस बहुत ही ज्यादा है ना आपको रट्टा मार देबो एथर किसी एक्सेप्शन न होबा दरकार इट्स वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक पंचमित्र दैट
कॉन्कोशन ऑफ इंडिया, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पंचमित्र कॉन्कोशन ऑफ इंडिया, है ना। ये तुमको हर हालत रे मन रखिया पड़ियो, बिकॉज दिस विल बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम, in your main, in your personal test as well, और पर्सनल इंटरव्यू रे हमें पर्सनल टेस्ट रे भी तुमको पचारि परियो। तो ये चारि जगह आसी परियो, है ना। चारि आडे तुमरो जोटी चाहिबो कि यूज करि परियो। लेट्स से प्रीलिम रे आसिलान तुम ताको मेंस रे यूज करि परिबो, है ना। मेंस रे हर हालत रे यूज कराबो। ताले फटाफट हम देखि दो ये पंचमित्र कोन। तो ये जो ये दैट मींस कॉप 26 समझते जानचो, कॉप 26 ग्लासगो, है ना, स्कॉटलैंड हमें जानिचे। दैट मींस COP 26 रे our honorable prime minister promised that India will do or India will act for the climate related what responsibility of India, how India is responsible or how much India is committed, that was shown during the COP 26 meeting रे हम कहथिले। तो सेटा कोन थिला, जेमति पांचटा हम पॉइंट देखबा ताको पंचमित्र, है ना। तो पांचटा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कोन ना, इंडिया विल प्रोड्यूस केते 500 गीगावाट, केते 500 गीगावाट रो रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। दैट मींस हमें कहबा रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बाय 2030। लेट्स से मुकबे नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी रो हमें इंडिया केते प्रोड्यूस करे 500 गीगावाट बाय 2030। सेकंड पॉइंट जति हमें देखिबा 50% हमें कोन एनर्जी हमरो कोठो आनिबा रिन्यूएबल सोर्स रो, हमरो जो 50% एनर्जी हमें रिन्यूएबल सोर्स आसीबो बाय 2030 टारगेट हमें नैचे। तो फास्ट को हला कोन ना, नॉन फॉसिल फ्यूल्स रो हमें 500 गीगावाट आनिबा, है ना, दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड एंड 50% ऑफ आवर टोटल एनर्जी विल कम फ्रॉम दैट इज द रिन्यूएबल सोर्स बाय 2030। द थर्ड पॉइंट, India will reduce 1 billion ton of carbon dioxide, है ना, 1 billion ton of carbon dioxide by again 2030, again 2030. This is the third point. Now fourth point रो कोन करबे, इंडिया कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रो इंटेंसिटी को केते 45% रिड्यूस करिवो। तो इंटेंसिटी, दैट मींस आई वुड से व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ CO2 को हमें 45% रिड्यूस करिवा, दैट इज द फोर्थ नंबर पॉइंट। Now comes to the fifth number point. Fifth रे कोन कहूची से net zero by 2070, net zero by 2070, है ना। ये थिला तमरो पांचटा पॉइंट, होप मन रही जो हेजबो एवरीवन। 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल रसिबो 2030, 50% हमें आनिबा एनर्जी from renewable by 2030, 1 billion ton of carbon dioxide reduce by 2030, carbon intensity को हमें 45% reduce करियो by 2030, है ना। and again we will talk about the net zero हमारा 2070। let's move on 28 question। hope एबे या बहुत important, जेतरो तमे क्लाइमेट चेंज ऊपर लिखुजो ना, कौन सी भी क्वेश्चन लिखो तो ये पॉइंट को ऐड करि परिबो। एनी क्वेश्चंस whether that is the global related question or India related questions, easily तुम्हें ऐड करि परिबो कि हां इंडिया इज हैविंग, इंडिया what I will say responsible player in terms of the, है ना। फोर्थ पॉइंट, कार्बन एमिशन जो अछि हमरो 45% हमें रिड्यूस करबा। कार्बन एमिशन को हमें केते 45% रिड्यूस करबा, है ना, एटा मन को बाय 2030। Now 28 question, as per the NASA study climate change which crops is set to growth the 17% due to the climate change, को क्रॉप सेमती अछि जहार प्रोडक्शन बढ़ी जिवो। Which crop कहार प्रोडक्शन बढ़िबो बोली कुआ जाउची 17% ग्रोथ ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। D B, let's move on। Susri B, Anupriya Sapti B, Sujata B and C, so it would be what, B, wheat production body jibo। now wheat production, then why wheat production will grow? Let's say everyone, many of you have put forward B and that's also correct answer।
Now the reason, what is the reason for that? Why wheat production will, but more there would be wheat produced? Why not rice? Why not maize, cotton, etc. So on and so forth? Because due to the what, climate change, the higher latitude, that means I would say your higher latitudinal region, they will experience more heat, है ना? That heat, higher latitude बेगर heat अधिक आसिबो, that means climate change द्वारा अधिक रु अधिक area favorable ହେଇଯିବ due to the climate change. Okay. अच्छा मु जदि कहबी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ର production जेतबे तमर atmosphere रे, let's say the concentration of the CO2 in the atmosphere increases, what would be benefit for the paddy crops or not? Whether that will be benefit for the paddy? If I say that would be, whether that would be benefit for paddy, how? Because that will carbon dioxide कोन करिवो से absorb करिवो, हां? Yes, carbon dioxide को absorb करिवो, that means हमर जो fertilizer कम दरकार हबो, आंसर मन fertilizer, less fertilizer would be required. Move on. बट ताको पॉजिटिव भाबी कि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक प्रोडक्शन कले ग्रीन हाउस गैसेस अधिक होइजबो, तादर कोन हमु तुमको कहछि CO2 इज नॉट ए व्हाट पॉल्यूटेंट, ये गोटे GHG. ध्यान से अगेन आई रिपीट, बहुत थोड़ा मु जानि छी ये क्वेश्चन भूल हुए कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट ए पॉल्यूटेंट, ये होची गोटे ग्रीन हाउस गैस, है ना? लेट्स मूव ऑन. 29th क्वेश्चन, व्हिच इंडियन स्टेट हैज सेड ever that is the special purpose vehicle to manage the 3 critical natural conservation mission? Okay, Susri is putting forward A, Abhijit B, Anupriya B. Abhijit, you are from Cuttack or somewhere else? Anupriya B. Rourkela, oh, nice. The rest, please put forward your answer. Okay, the answer is what? B. Answer it also B. Now, if I ask you, what are that 3 critical natural conservation mission? What are that 3? Now, that 3 is, okay, now that 3 would be your climate change and your what? That is the wetland mission and green movement. That means TN, I will write like this: TN, climate change, TN, that is wetland mission, and TN, green mission. Okay, so these would be the 3 important component. तो आपको तमे केस स्टडीज रे लिखि परिबो. फॉर एग्जांपल लेट्स से तमे एनवायरनमेंट ऊपर कोन से गोटे क्वेश्चन लिखुछ कि लाइक मतलब अदर स्टेट आल्सो कम फॉरवर्ड, they should come forward like Tamil Nadu to have their own initiative like this, so that Tamil Nadu जेंति wetland conservation करूची conservation पाई. That means जेते हमरो corporate अछि ना, corporate house, all the corporate house in Tamil Nadu, they have been asked कि you have to focus on these 3 critical, that is natural conservation mission: wetland, green, that is a green and green mission and climate change ऊपर ध्यान देबो पड़े जो भी हमरो corporate houses वगैरह अछि. Then I'm siba that is the PECA 2 to that is ROA. So these are ये कौन तुमको पता है जी? Is a long-tailed bat belonging to which country? Simple. PECA Tau ROA is a